हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शो ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम 3 पॉइंट क्रॉस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो 2 पॉइंट क्रॉस के पीवाईक्यू सॉल्व किए हमने। तो हम देखेंगे हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट involving mapping of 3 genes A, B, C in Drosophila, a 3-point test cross is carried out. The parental cross was okay, and the genotypes of the double crossover are this. Based on this, determine the order of the gene. ओके, इजी है, ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली पेरेंटल क्या है, ए बी बी सी सी एंड ए कैपिटल बी बी स्मॉल सी। दिस आर पेरेंटल्स एंड डबल क्रॉस ओवर्स आर ए बी बी सी एंड ए ओके, दिस इज द डबल क्रॉस ओवर जेनोटाइप। तो अभी ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। तो व्हाट वी हैव टू सी, ए एंड कैपिटल सी, इस कंडीशन है, राइट, सेम, एंड बी स्मॉल है यहाँ पे, ए एंड सी दिस है, बी इज इन ट्रांस, राइट, एंड डबल क्रॉसओवर में ए एंड बी ट्रांस में है, ए एंड सी ट्रांस में है। ओके, यहाँ पे ए एंड सी इसमें था, ए एंड बी ट्रांस में, यहाँ पे ए एंड बी ट्रांस में, यहाँ पे दोनों भी ट्रांस में है। ओके, ट्रांस मीन्स अपोजिट, राइट, ए बी ट्रांस, so this is in the parental, and double crossover में क्या है, A and B is in trans and A and C are also in trans। मतलब चेंज क्या हुआ है, C चेंज हुआ है, पहले C cis में था, अभी वो ट्रांस में हुआ है, so the C will be in the middle। okay, C will be in the middle। C, first option number 1। okay, got it? How we can find out the order? जो चेंज होता है डबल क्रॉसओवर में, दैट वी हैव टू सी। अभी C जो है, A एंड C पेरेंटल के केस में इस कंडीशन में था, एंड डबल क्रॉसओवर के केस में ये ट्रांस में हुआ, तो C इज चेंज, तो C विल बी इन द मिडल एंड दैट इज इन द ऑप्शन 1 ओनली, राइट। सेकंड क्वेश्चन, पॉपुलर इज अ डाइशियस प्लांट, अ वाइल्ड प्लांट विद द जीन्स AABBCC was crossed with triple recessive mutant small AABBCC, right? The F1 male hybrid was then back crossed with the triple mutant. Okay, that is test cross. The phenotypes recorded are as follows. Now what we have to find, distance in map units between A to B and B to C. Okay, see, क्वेश्चन जैसा है वैसे हमें आंसर को फाइंड करना है, राइट। अभी यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ही हमें देखना है, ओके, हमें यहाँ पे ऑर्डर नहीं देखना। ओके, सो हाउ वी कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है। जो हाईएस्ट होता है दैट इज पेरेंटल, तो 300 एंड 310 पेरेंटल्स है। ओके, एंड जो लीस्ट है दैट इज डबल क्रॉस ओवर, DCO आई विल राइट, डबल क्रॉस ओवर। ओके, एंड जो बाकी होंगे दैट इज सिंगल क्रॉस, तो दिस इज सिंगल क्रॉस ओवर, दिस इज अगेन सिंगल क्रॉस ओवर, सिंगल क्रॉस ओवर एंड सिंगल क्रॉस। ओके, तो इसका टोटल क्या है, 1000 इज टोटल, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल डू द कैलकुलेशन बाय फॉर्मूला, सिंगल क्रॉसओवर A and single crossover B। So first is 100 and 120, okay, 100 plus 120 plus double crossover 16 plus 14,
अपॉन टोटल is 1000 multiply by 100. So here we get 220 plus 16 plus 14 is 30. 1000 multiply by 100. We will solve this later on. Then again 250 upon 1000 multiply by 100. So 2 zeros will cut. Again 110. So 25 is single crossover A. So 25 is present in option 1 and 3. 2 eliminate, 4 eliminate. Okay, 1 and 3 में से आंसर होगा. Now we will find single crossover B. I will erase this. Let's erase this to make your place. Right. Single crossover B is equal to, now I will do 65, 75. Okay, 65 plus 75 plus 16 plus 14 upon 1000 multiply by 100. Okay, 65 plus 75 is 140 plus 16 plus 40, 30. Okay, now 140 plus 30 is 170 upon 1000 multiply by 100. In 17 will be the answer. Okay, so 17, that is option number 1. 25 and 17 map units. Okay, like this we can find out. And हमने concept में discuss किया है separate video में, that please watch. Okay, now the next question. In Drosophila, bar I is B dominant mutation, while miniature wing and yellow body color are recessive mutation. Heterozygous females for these mutations were crossed to normal-eyed miniature wing and yellow body color males. Okay, मतलब क्रॉस किया है नॉर्मल से एंड येलो. Assume the following progeny was obtained. Okay, based on the results obtained, the order of gene order we have to find as well as genetic distance between B and Y. Okay. Okay, so order we have to find first of all. Let's see. More number 185. This is parental. Okay, parental B plus M Y एंड इसका ऑपोजिट होना चाहिए 185 165. बी एम प्लस वाई प्लस. जो सबसे कम नंबर है दैट इज डबल क्रॉस ओवर 20. ओके, 20 बी एम वाई एंड इसका ऑपोजिट क्या है देखना है, बिकॉज यहाँ पे 25 है. ओके, 20 और 25 को चूज नहीं करना चाहिए बिकॉज दिस इज रॉन्ग. बी एम वाई प्लस दिस इज रॉन्ग. इसका ऑपोजिट होना चाहिए. राइट, so this should be B plus M plus Y plus, and that is 30 basically. Okay, so 20 के साथ 30 and parental is 165 185. Got it? So these are the double crossovers. अभी हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन. बी चेंज हुआ है यहाँ पे, एम वाई सेम है, बी चेंज राइट. ये बी प्लस नीचे गया, so B should be in the middle. B should be in the middle. So that is present in option B. Okay, so 1 and 3 will be wrong, right? 2 and 4 में से आंसर होगा. अभी जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन B and Y कैलकुलेट करना है. So now we have to identify the single crossover between B and Y. Okay, मतलब B प्लस चाहिए अभी, और we can identify B प्लस चाहिए and Y चाहिए and B with Y plus.
जो ऐसा होगा दैट विल बी सिंगल क्रॉसओवर. लेट्स सी. It is P plus Y plus 120. So I will write here 120 plus 110. Okay, 110 डबल क्रॉसओवर को ऐड करना है. दैट इज 20 plus 30. Total is 700 here upon 100. 30 plus 20 is 50. 120 plus 110 is 230 upon 700 multiplied by 100. Right? Then so we get here 280 upon 700 multiplied by 100. After calculation we get 40 centimorgan. Okay, so correct combination of answer is option 2, B and C. Okay, got it? ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट वी सॉ ऑर्डर एज वेल एज जेनेटिक डिस्टेंस. फर्स्ट पैरेंटल्स को देखना है, देन डबल क्रॉस ओवर को, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट जीन ऑर्डर वी कैन फाइंड. ओके, एंड आफ्टर ऑर्डर सिंगल क्रॉस ओवर को फाइंड आउट करना है बाय सीइंग द क्रॉस. राइट. तो अगर अभी तक आपको हेल्पफुल लगा होगा, इजी लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. राइट. In Drosophila melanogaster, traits ABC result from recessive alleles that are located on one of the autosomes. The resulting F1 females were test crossed and the following progeny, total of 1000 were obtained. Okay, total दिया है 1000. Right. Now we have to see the order as well as distance. Same like previous question, order and distance. Which one of the following option represent statement that are correct? Okay, 1000 है यहाँ पे. So this is parental, 350, 380. This is parental, right? A plus B plus C plus A B. Okay, these are parentals. 10 and 15 double crossovers है. So I will write here उसका genotype A B C plus and A plus B plus C. तो यहाँ पे C चेंज हो रहा है. C okay, C चेंज हो रहा है, ऑपोजिट आ रहा है. तब C will be in the middle position. C will be in the middle position and this is in two options, ACB, BCA, two options, right? B and C. Which of the following option represents statement that is are correct? See, both the statements are correct. एक ही ऑप्शन में है, इसी से हमारा आंसर आ जाता है. एक्चुअली नो नीड टू सॉल्व द होल सम, इसी से हमारा आंसर आ गया. बी एंड सी एक ही ऑप्शन में है एंड यू कैन सॉल्व दिस बाय योर साइड एंड चेक. राइट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 3. बिकॉज आई एम टेलिंग यू हाउ यू कैन सॉल्व क्विकली. मतलब ऑप्शन देख के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, दैट आई एम शोइंग यू. E. coli cells were simultaneously infected with two strains of phase lambda. One strain of lambda had mutant host range, is temperature sensitive and known to produce clear plaques. Another strain of lambda carried the wild type alleles, genotype H plus S, C plus C plus. Progeny phages were collected from the live cell and were plated on the bacteria. The following numbers of different progeny were obtained. So what will be the order of the three genes? So order हमें find out करना है. This is also very easy. So see, this is the parental. This is a parental. Okay. H plus, ST plus, C plus, and H, ST parental है. This is a double crossover. I will write D only. Okay. So उसमें H plus, C plus, ST and H, C, ST plus. ST is changed. ST should be in the middle.
ST should be in the middle, that is only in the option 1C. So easy question. एक ही option में है where ST is the middle, right? Now the next question. A 3-point test cross was carried out in Drosophila melanogaster involving 3 adjacent genes X, Y, Z arranged in the same order. The distance between X to Y is 32.5 map unit and Y to Z is 20.5 map. The coefficient of coincidence is 0.886. What is the percentage of double recombinants in the progeny obtained from the test cross? Okay, यहाँ पे एक न्यू टर्म है that is related to interference basically, right? X, Y, Z 3 genes के X and Y के बीच में 32.5 डिस्टेंस है and Y to Z 20.5. Okay, and coefficient of coincidence is given as 0.886. Okay, अभी हमें डबल क्रॉस ओवर का नंबर फाइंड आउट करना है ऑब्टेन फ्रॉम द H cross. Very easy. Coefficient of coincidence, I will write only C here, is equal to observed double crossover, okay, upon expected double crossover. तो इस फॉर्मूले से हम ऑब्जर्व्ड का नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, राइट? एंड व्हेन वी डू दिस, व्हेन सी कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस इज 0.886, ओके, एंड जो ऑब्जर्व्ड है दैट वी विल राइट एज इट इज observed double crossover. So using this information we can calculate the expected double crossover sequence. How to do that? Basically 32.5 upon 100 multiply by 20.5 on 100 multiply by 100, okay, and then you get 6.6625. Okay, so here will be coming 6.6625. Then after cross multiplication you will get observed double crossover is equal to 5.9, and that is option number 1, 6%. Okay, 6%. Now this is the last question. Curl wing, ebony body color and sepia are 3 recessive mutations that occur in fruit flies. The loci for these mutations have been mapped and they are separated by the following hypothetical map distance. Okay, so again here the interference between the gene is 0.4, right? Mutant CUESY fly was crossed with a homozygous wild type fly. The resulting F1 females were test cross that produced 1800 progeny. What number of flies in each phenotype class is likely to be obtained in the progeny of the test cross? Okay, see, this is also easy question but tricky है थोड़ा. How tricky? Because यहाँ पे interference दिया है, okay, interference दिया है, थोड़ा tricky हो जाता है, right? Interference is 0.4, okay, and the next important thing is total जो progeny है हमें 1800 है. So these two are the important information from this question, right? अभी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बेसिकली वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेरेंस से हम डबल क्रॉसओवर का नंबर देख सकते हैं. ओके, इंटरफेरेंस इज 1 minus coincidence, right? Coefficient of coincidence. Coefficient of coincidence. I will write here, right? What is this concept we have seen in the separate video? Okay. Explanation के साथ हमने देखा है what is interference.
व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, राइट। अभी यहाँ पे इंटरफेरेंस दिया है 0.4 एंड 1 माइनस दिस इज x, हाँ, सपोज x, तो वी कैन फाइंड दिस x हाउ, बेसिकली 0.4 को हम 1 माइनस 0.4 कर सकते हैं, so that will be 0.6. तो कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस इज 0.6. अभी ये कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या है? बेसिकली दिस इज अगेन वी हैव सीन ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉसओवर अपॉन एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर, ओके, ऑब्जर्व्ड अपॉन एक्सपेक्टेड. So coefficient of coincidence I will write C only now. C is what? 0.6. okay, third हमें फाइंड आउट करना है. Expected we can calculate by the this thing Centi-Morgan, 12 Centi-Morgan. First we will calculate the expected one. Expected को calculate कैसे करेंगे? 20 upon 100 multiply by 12 upon 100 multiply by total, that is 1800. Okay, so here the answer comes 43.2. 43.2 expected double crossover है, right? Observed we can do the cross multiplication. Okay, so we get 25.9, that is observed. Okay, observed. So 25.9 means 26, right? So 26 is present here. Option 1 में present है 26 and option 3 में present है 26. So 43, this is wrong. So 2 and 3, 2 and 4 will get eliminated. Okay, 1 and 3 में से आंसर होगा. अभी क्या करना है? सिंगल क्रॉसओवर फाइंड आउट करना है, राइट? See, we have to remember this. This is observed double crossover. I will erase this so that this is much clear. Observed double crossover number is 25.9. That is 26. Okay. Now सिंगल क्रॉसओवर अभी हम देखेंगे. दिस इज 20. ये सिंगल क्रॉसओवर अभी 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1800 वी विल डू. तो इसका आंसर क्या आता है? वी गेट 360 ईयर. ये सिंगल क्रॉसओवर 360. तो 360 माइनस वी विल डू 25.9. 360 minus 25.9. Then we get 334. 334 सिंगल क्रॉसओवर है. एंड द नेक्स्ट 12, इसका भी. तो व्हाट वी डिड, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द सिंगल क्रॉसओवर 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 टोटल प्रोजेनी. देन जो वैल्यू आता है उसमें से डबल क्रॉसओवर को माइनस करना है. ओके, फॉर द सेकंड क्रॉस आई विल शो अगेन 12 अपॉन 100. ओके, दिस इज सिंगल क्रॉसओवर ए, सिंगल क्रॉसओवर बी. तो हमने ए का देखा, अभी हम बी का देख रहे हैं, राइट? एंड दिस इज अपॉन टोटल. So what you get here? We get 216 and 216 को माइनस करना है by 25.9. Okay, we get 19, right? 19. Actually, what happens? 334 plus what we can do? 334 plus 190 is 524, which is in the option 4, but that is wrong already, right? But this is wrong. Okay, so obviously option 1 will be correct now from this point. Okay, because 334 190 is, but I will show you the rest of the sum, right, so that it will be clear. अभी ये सिंगल क्रॉसओवर है 190, राइट, एंड 334. ओके, डबल क्रॉसओवर तो हमें पता है, राइट. तो अभी रिकॉम्बिनेंट से हम नॉन रिकॉम्बिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो हाउ? So this is single crossover A.
Okay, now single crossover A plus single crossover B plus double crossover, right? These are recombinants. Okay, minus total, we will get non-recombinant, that is parental or non-recombinant, right? So सिंगल क्रॉसओवर ए क्या है 334, बी is 190, डबल क्रॉसओवर is 25.9. and we do the calculation 1800, we get parentals, so here we get 1250. Okay, so that is true for the first case. So 1 will be the confirmed correct. Okay, so this was questions about 3-point cross. Okay, हम कैसे easily solve कर सकते हैं यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन, राइट? कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और ट्रिकी होते हैं, राइट? वी कैन सॉल्व दोज क्विकली बेसिकली बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन. यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मूलाज. ओके, एंड वॉच द थियरी वीडियोज विच आई विल बी अटैचिंग बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.